तो इस पार्ट में हम डायक्स्ट्रा के एल्गोरिथम की करेक्टनेस प्रूव करेंगे। इस कोर्स में हमने प्रूफ ऑफ करेक्टनेस का जो सेक्शन है उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। ज़्यादातर हम डिज़ाइन और एनालिसिस की तरफ रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ग्रीडी एल्गोरिथम्स में हमें प्रूफ ऑफ करेक्टनेस करने चाहिए। एक तो ये कि अगर आप एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं जो कि ऑब्वियसली ट्रू नहीं है, तो यू हैव टू राइट अ प्रूफ ऑफ करेक्टनेस। दूसरा, even just to study algorithms, if you study the proof of correctness of an algorithm, then you really understand it, because then you know why it is doing the job. Okay, so let's talk about Dijkstra's algorithm. Algorithm समझाते वक्त already मैंने कुछ इस किस्म की um, इसमें argumentation की आपके साथ कि it should be relatively straightforward now for me to explain to you कि ये algorithm कैसे काम करता है और क्यों correctly काम करता है। तो थोड़ी सी इंडक्टिव प्रूफ हम बेसिकली करेंगे। मैं आपको ये शो करूंगा कि डायक्स्ट्रास एल्गोरिथम जो ग्रीडी चॉइस करता है, जो उसकी लोकल ग्रीडी चॉइस होती है, दैट ग्रीडी चॉइस इज पार्ट ऑफ some global optimal tree. Now you have to pay special attention to the language. I'm not saying that the choice which Dijkstra's algorithm makes is the only optimal choice. No, there are multiple optimal solutions possible, as is often the case. So multiple solutions, maybe solutions different than the one produced by Dijkstra, can exist. All we need to show is that the choices made by Dijkstra's algorithm will produce some optimal solution. Okay, that's the only thing we need to show. तो ट्री जो है वो प्रोग्रेसिवली बिल्ड होता है, और वो बिल्ड होता है by adding one edge at a time. It is easy to show, sorry, not one edge, I'm sorry, one vertex at a time. It's easy to show that the base case is true. So जो आपका base case है वो ये है कि ट्री ऑफ साइज 1, ओके, जो आपका ट्री टी है उसका साइज 1 है, यानी कि उसकी जो वर्टिसेस हैं उसका साइज 1 है। इनफैक्ट इफ यू वांट टू राइट वी, दैट वुड बी बेटर, आई थिंक वी सब टी, यानी जो ट्री टी है उसमें जो वर्टिसेस हैं just one vertex, and that is your source vertex. It is obvious to see that वो जो tree है आपका वो optimal है, because in your tree there is only one vertex, it is source, और उसकी जो डिस्टेंस है वो 0 है। तो अगर यही खाली वर्टेक्स हो तो दैट इज एन ऑप्टिमल ट्री फॉर जस्ट दैट वर्टेक्स। ओके, so now we will see कि what if I have k vertices in my tree and I am now adding the k plus first vertex into the tree. Okay, एक vertex x है, तो ये मैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस क्या है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इंडक्टिव हाइपोथेसिस ये है कि we have k is, sorry, T is an optimal, again, an optimal, not the only optimal, an optimal tree for k vertices. Okay, this is, let's call this T prime, क्योंकि ये अभी सब ट्री है ना, ये मुकम्मल नहीं हुआ. Okay, so T prime is an optimal tree for k vertices after k iterations of Dijkstra's algorithm. Okay, so now we are going to make the k plus first iteration. So I'm just going to tell you that in the inductive step, I'm going to tell you that every step is correct. Meaning when you are at the kth step, the k plus first step makes a choice which is one of the globally optimal choices. Okay, and in so basically, if you're starting from the base case, choice number 1 will be one of the globally optimal choice, and then choice number 2 will be another one of globally optimal choices, and so on and so forth. Okay, how do we do this inductive step proof? वो ये है कि k vertices जो हैं वो already tree में हैं, तो think of the tree that has been built so far.
Okay, ये k vertices हैं, but obviously I can't show some indefinite number. I'm taking a few vertices. Let's say these are k. So ये आपका tree है t prime. Okay, और जो आपकी vertices हैं t prime के अंदर, they are currently k vertices. So now what's going to happen in the k plus first iteration? Think of the algorithm. The algorithm is going to extract one vertex. Let's use the color green for it from the heap, and it's going to basically ये वो vertex है जो heap में है. Let us say, okay. और इसको मैं value दे देता हूँ y. ये heap में जो minimum value वाली vertex है, जो कि extract होने वाली है, वो ये y है. और आप बेसिकली एल्गोरिथम कह रहा है कि यहाँ पर एक वर्टेक्स x है जो ऑलरेडी ट्री में मौजूद है. इस k में से एक वर्टेक्स ये है और ये नेक्स्ट कनेक्शन आप कर दें. दिस इज द नेक्स्ट Dijkstra connection. Okay, and all we need to show is that this connection, if we make it, the next tree that you will get of k plus 1 vertices, it will be one of the optimal solutions for those k plus 1 vertices. Yes, other optimal solutions are possible, but it will be one of the optimal solutions. So let me try to give you that proof. And इस step में हम एक proof by, not by contradiction, but let's take another example here. Not exactly by contradiction, but I'm going to show you that this is a correct choice. So यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम ये कहते हैं कि ओके, लेट्स से कि ये चॉइस नहीं होती, y जो है वो x के साथ कनेक्टेड नहीं होता हमारे शॉर्टेस्ट पाथ ट्री में. लेट्स से कि हमारा जो ऑप्टिमल ट्री है उसके अंदर y की जो कनेक्शन है इस ट्री के साथ, it happens through another path. Okay, and that path, maybe that path starts from here and it it goes out, and then there are some vertices here and here and here, ऐसे है कुछ. Okay, और obviously ये दोबारा यहाँ जाकर तो कहीं कनेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि साइकिल तो नहीं है, ट्री बना रहे हैं हम. सो इधर है और फिर होते होते फाइनली वो y तक आता है और हम कहते हैं जी ये जो आप चॉइस कर रहे हैं ग्रीन वाली, इसकी बजाय ऑप्टिमल में ये है. सो नाउ वी कैन शो दैट अगर ऑप्टिमल में ये है तो ये जो कॉस्ट हमें देगा, ये जो वाइट वाला सोल्यूशन है, हमारी चॉइस उतना ही अच्छा या उससे बेहतर सोल्यूशन हमें देगी. यानी कि अगर ये वाइट ऑप्टिमल है तो हमारा जो चॉइस है वो इससे किसी भी तरह बुरी नहीं है, लिहाजा हमारी चॉइस भी जो है वो it has to be optimal, part of an optimal tree. So how do we show that? Now let's use some symbols here. Let's think of this path. Let's give them some names. Let's say ये जो vertex है आपकी ये x prime है, और ये जो पूरा path है x prime से y तक, इसकी जो पूरी cost है, यानी इसकी edges की, उसको हम कह देते हैं c x prime y. This is the cost of this wide path. और ये जो आपके पास ग्रीन जो एज आ रही है, इसका वेट आपको पता है WXY है. तो जो हमारा सोल्यूशन है, डाइक्स्ट्रा का सोल्यूशन, वो y की जो डिस्टेंस बना रहा है फ्रॉम द सोर्स, दैट डिस्टेंस इज एक्चुअली द फॉलोइंग: डिस्टेंस ऑफ x जो कि ऑलरेडी कंप्यूटेड है, प्लस वेट ऑफ XY. Obviously, this is the number which we are extracting from the heap. This was the minimum number in the heap. Y के ऊपर जो distance लगा हुआ था, because Y के साथ X का connection है तो X उसका parent होगा, तो जो number लगा हुआ है वो distance of X plus weight of XY है, जो ये heap में से Y extract हो रहा है. तो ये हमारा total Y के path की distance फिर ये बनेगी, distance of Y ये बनेगी. और ये है Dijkstra की choice. This is Dijkstra choice for the distance of y. और जो ये white वाला path हमें बता रहा है,
वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्स प्राइम, जो एक्स प्राइम की अपनी डिस्टेंस इस ट्री के अंदर है, प्लस कॉस्ट ऑफ एक्स प्राइम वाई, मतलब दिस एंटायर थिंग. And so this is like an alternate and optimal. We're saying that this is the optimal. So let's call this A and let's call this B. And all I'm going to show is that our choice, A choice, will give distance of Y which is less than or equal to this optimal choice. Meaning this choice that we are making has to be optimal as well. तो जो हम जिस चीज पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं वो हम डिस्टेंस y यानी इस चीज के ऊपर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, डिस्ट y. जाहिर है कि जो भी ऑप्टिमल ट्री होगा उसमें जो y की डिस्टेंस है फ्रॉम द सोर्स, इट हैज टू बी द बेस्ट पॉसिबल. तो अगर ये ऑप्टिमल है और जो हमारा एल्गोरिथम है हम ये शो करते हैं कि वो ऐसी डिस्टेंस दे रहा है जो इसकी डिस्टेंस से कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है कि फिर ये हमारा वाला जो है ये भी ऑप्टिमल है. ओके, तो हाउ डू वी शो दैट? उसके लिए लेट्स introduce one more symbol. So this was x prime. Let's say ये जो x prime का path बाहर जा रहा है यहाँ पर you have something like y prime. Now think of the vertex y and the vertex y prime. Both of these vertices are in the heap because y prime is not in the tree, so it is in the heap. Also y is in the heap right now. Okay, so think of this distance. Okay, let's just break it down. So ये जो टोटल डिस्टेंस हमने लिखी है b, इसको अगर ब्रेक डाउन करें तो वो बन जाती है डिस्टेंस ऑफ एक्स प्राइम, जो उसकी सोर्स से डिस्टेंस है, प्लस सी एक्स प्राइम वाई. अभी तो मैं इसको वैसे ही लिख रहा हूँ. दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, अब मैं उसका ब्रेक डाउन लिख रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ एक्स प्राइम प्लस थिंक ऑफ दिस सी एक्स प्राइम वाई. सी एक्स प्राइम वाई इज दिस एंटायर कॉस्ट. इसमें से ये पहली एज अलग कर लें. सो एक्स प्राइम वाई प्राइम जो है उसको, उसकी कॉस्ट को इस सी एक्स प्राइम वाई में से निकाल दें, तो वो एक एज है तो उसका वेट आएगा, दैट विल बी डब्ल्यू ऑफ एक्स प्राइम वाई प्राइम. Okay, that is this edge which I have I have counted it separately. और फिर उसके बाद ये वाली कॉस्ट जो कि y प्राइम से आगे y तक आती है, तो मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ x प्राइम y प्राइम, सॉरी x प्राइम y is made up of weight of x prime y prime and then the cost from y prime to y. So I'm just going to add this plus cost of y prime to y. Now things will be obvious to see. ये जो आपकी क्वांटिटी है डिस्टेंस ऑफ x प्राइम प्लस वेट ऑफ x प्राइम y प्राइम, ये जो एंट्री है this much is currently in the heap. ओके, हीप के अंदर y प्राइम भी हीप में है, y भी हीप में है. y प्राइम की जो वहां पर वैल्यू पड़ी हुई है x प्राइम से, अगर y प्राइम की जो वैल्यू है वो बेस्ट भी हो, तो करंटली वो एक्चुअली वो डिस्टेंस ज्यादा है देन द डिस्टेंस ऑफ x प्लस y, बिकॉज जब हम हीप में से एक्सट्रैक्ट मिन कर रहे हैं तो हमें y मिल रहा है, y प्राइम नहीं मिल रहा हमें. तो अगर हमें एक्सट्रैक्ट मिन करके y मिल रहा है तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ x प्लस वेट ऑफ एक्स वाई is less than or equal to distance of x prime plus weight of x prime y prime, right? So this quantity, let's call it well, not call it anything, but I'm just going to separate it out. Distance of x prime plus weight of x prime y prime. Okay, this thing has to be greater than or equal to distance of x plus weight of xy. क्योंकि जब मैं हीप में से एक्सट्रैक्ट करता हूं, दिस इज द नंबर दैट कम्स फ्रॉम द हीप. सो ऑब्वियसली ये कम छोटा नंबर होगा, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर होगा, तो ही ये निकल रहा है ना, हैज टू बी द स्मॉलेस्ट नंबर. मतलब एक से ज्यादा भी स्मॉलेस्ट हो सकते हैं, हो सकता है ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल हो जाए, लेकिन चूंकि हमें ये चीज मिल रही है इसका मतलब है दिस हैज टू बी वन ऑफ द ऑप्टिमल डिस्टेंसेस.
So now when you combine this with A, हमारा एल्गोरिथम जो है वो y की जो डिस्टेंस है वो सिर्फ इतनी दे रहा है, और ऑप्टिमल जो y की डिस्टेंस है वो दे रहा है ये क्वांटिटी, जो कि हमारी वाली क्वांटिटी से बड़ी ही हो सकती है या बराबर हो सकती है, प्लस दिस एक्स्ट्रा क्वांटिटी. Okay, so actually it means our algo um, is producing, it can only produce a better result. So if we assume that the result that you are giving, alternate one, if that is optimal, then our solution also has to be optimal. Okay, so the overall the overall conclusion here is that distance of x plus wxy, which is given by our algorithm, that's Dijkstra's algorithm, that has to be less than or equal to distance of x prime plus c x prime y, the alternate. Okay, so that is the proof, and therefore this means that adding y to t prime, we get a k plus 1 vertex tree, which is optimal. Okay, and that actually finishes our inductive proof. So all of you should be comfortable in knowing like how induction works. In the beginning, base case हमें ये कह रहा है कि जब आप एक vertex पकड़ते हैं तो that has to be an optimal tree. अब हमारे पास inductive step आ गया, इसका मतलब है जब मैं पहली नोड डालता हूँ तो यहाँ पर मेरा k is equal to 1 था in the beginning base case में, तो ये k is equal to 2 है, तो ये भी एक 2 size का optimal tree होगा. फिर जब मैं तीसरी नोड डालूंगा तो ये जो भी बनता है ये 3 size का एक optimal tree होगा. That's what induction is telling me. So it doesn't matter how many vertices are in the tree. One by one, we keep on making one of the globally optimal choices. One note that I will make here to kind of, it tells us something about greedy algorithms is that a greedy algo makes a locally optimal choice. Jaise ki Dijkstra's algorithm makes a locally optimal choice, which is that pick the vertex, in this case y, which is closest to the tree, the current tree in this step. That is a locally optimal choice. What we have shown is that that locally optimal choice is globally optimal. That whatever tree I will get in the end, the distance of y in that tree produced by our algo will be a globally optimal distance of y. And therefore, it is a correct choice. So this was Dijkstra's algorithm and its proof of correctness. And I hope that you have understood this algo. And if I ask you to make a few variations in this algorithm, in your homework, I'm going to add 2 problems from Dijkstra. So you should be able to make those variations. And the kind of problems I will add will be like, you will have the same, like this skeleton of code. यही code का skeleton है, इसकी समझ होनी चाहिए. और उसमें कुछ थोड़ी बहुत change करके आपको कुछ मुख्तलिफ चीज achieve करनी पड़ेगी. So that will be in the homework. Thank you.